Hello and welcome back to Witsol. In today's lecture 4 of English tense series, we are going to learn about the present perfect continuous tense. In this series, we are going to learn tenses in a very innovative and easy to learn way. So present perfect continuous tense कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन से auxiliary verbs यूज होते हैं, किस सिचुएशन में हम कौन सी गलतियां करते हैं और उनकी करेक्शंस क्या हैं, ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो describing actions that started in the past and are still continuing now. ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करना जो पास्ट टेंस में शुरू हुए थे और अभी तक जारी हैं. कुछ ऐसे काम जो शुरू तो पास्ट टेंस में हुए थे लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, अभी तक जारी हैं, तो दैट टेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years. मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, पिछले 2 सालों से पढ़ रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years. Similarly, she has been cooking since morning. So her cooking is not finished yet. She has not done her work yet. So she has been working since morning. Morning से वो काम कर रही है और अभी तक उसका काम जारी है. Next, they have been waiting for an hour. वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और अभी भी उनका इंतज़ार जारी है. Similarly, let's see what are going to be the goals for today's class. आज की क्लास में हम क्या क्या कुछ सीखेंगे. उनमें से पहली चीज़ है, by the end of this lecture you will be able to identify the present perfect continuous tense. पता चल जाएगा आपको कि कहाँ पर आपने present perfect continuous tense यूज़ करना है, कौन सी situations में, और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये present perfect continuous tense का इस्तेमाल है और इसका मतलब ये है कि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था and it still continued in the present tense. And use has been or have been with verb first form and ing correctly. Has been और have been का यूज हमने कहाँ करना है, कौन सी situations में करना है और उसके साथ कौन सी form of verb लगनी है, ये हमें correctly अंदाजा हो जाएगा after all this practice. उसके अलावा describe actions that started in the past and continue now. और अभी तक continued है वो actions, उनके बारे में हमें define करना आ जाएगा. So let's start with the structure and practice of all the types of tenses in present perfect continuous tense. Starting with affirmative sentences, जो कि simple sentences भी कहा जाता है, positive sentences भी कहा जाता है. So let's see what's the structure for affirmative sentences. Start करते हैं हमेशा subject से, followed by has और have. जो भी subject है उसके according has लगेगा या have लगेगा, followed by been, has been या have been. After that, the first form of verb with ing and object and time expression. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के अलावा टाइम एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट्स न्यू हेयर. हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा टाइम एक्सप्रेशन कहाँ इस्तेमाल करना है. क्योंकि काम जारी है तो हमने ये भी बताना है कि कब से जारी है और अभी तक जारी है. सो इसमें कॉन्टिन्यूस की कुछ चीज़ें आएंगी और कुछ चीज़ें परफेक्ट की आएंगी. तो परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, वो हमने यूज़ कर लिया. और कॉन्टिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज़ होता है, वो भी हमने यूज़ कर लिया. तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. उसमें हमने कहा कि कोई एक्शन पहले से जारी है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, तो कब से वो एक्शन जारी है हमें वो भी तो बताना होता है. फॉर दैट वी यूज टाइम एक्सप्रेशन. टाइम एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours. मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ रही हूँ और अभी तक पढ़ रही हूँ. And she has been watching TV since morning. Similarly, they have been playing football all day. And we have been learning English since 2023. Let's look at what are the auxiliary verbs used in this tense. Auxiliary verbs कौन से यूज हुए हैं? Auxiliary verbs recall कर लेते हैं, होते क्या हैं? They are helping verbs जो जिनका अपना कोई मतलब नहीं होता, but they help us identify कि कौन सा टेंस है, किस जमाने की बात हो रही है. सो
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज बीन यूज होता है विद ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, एंड हैव बीन इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हैज बीन कैसे सिंगुलर्स के साथ यूज होता है और हैव बीन कैसे प्लूरल्स के साथ यूज होता है। He has been studying for his exams. He is a singular subject, singular pronoun है, उसके साथ has been लगा। I have been working all morning. I is a plural pronoun, हम उसके साथ have been लगाएंगे। They have been building this house for months. They is also a plural pronoun, तो उसके साथ भी have been use किया। Now moving on to time expressions. हमने बात की थी कि time expressions भी यूज होंगे। So time expressions कौन कौन से होते हैं और कहाँ कौन सा time expression यूज किया जाता है। So time expressions are since and for, और since यूज होता है exact starting time जब हमें पता हो, when we know when some action exactly started. For example, 4 p.m., 6 a.m., morning, evening, 2023, 5 years. So for example, she has been working since 8 a.m. वो 8 बजे से काम कर रही है। For, on the other hand, is used when we just know the duration of time. For example, when we say, she has been studying for 2 hours. She has been learning English for 5 years. तो हमें ड्यूरेशन पता है, लेकिन हमें ये नहीं एग्जैक्ट पता कि किस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो रहा है एक्शन। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए since, period of time के लिए for. So let's look at some examples. They have been waiting for 2 hours. 2 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं। So we can say since is used for point of time and for is used for period of time. Moving on to the negative sentences. अब negative sentences का structure क्या होता है? The sentence always starts with subject followed by has or have, then comes not, negative की basic cheese not, and then we write been, and after that first form of verb with ing and then object. Let's look at some examples. I have not been feeling well lately. She has not been studying regularly. They have not been working this week. He has not been sleeping properly. Moving on to the interrogative sentences. Interrogative sentences question sentences होते हैं। Let's look at the structure they have. So has और have हमेशा interrogative sentences में auxiliary verb start में चले जाते हैं। Similarly, has or have will go at the start of sentence, followed by subject, been, first form of verb with ing, and object, obviously question mark at the end. So let's look at some examples for interrogative sentences. Examples देख लेते हैं। Have you been waiting long? Has she been working today? Have they been living here for years? How long have you been learning English? Where has she been working? अगर question word आएगा तो वो auxiliary verb से पीछे आएगा. For example, how long have you been learning English? Or where has she been working? So this was all about present perfect continuous tense. अब देखते हैं कौन सी common mistakes हैं जो हम करते हैं. There's the first example. I am learning English since 2 years. Is it correct? No, it's not correct. Since 2 years is not correct because 2 years is the period of time. और period of time के साथ हम since नहीं for use करते हैं. I have been learning English for 2 years. यहाँ पर since की जगह for आएगा. Next sentence is they have been studying. So here the mistake is they have used being instead of been. They have been studying. So you should never confuse been with being. They are two different words and carry different meanings. That was all for today's class of present perfect continuous tense of our learning tenses series. In the next class, we are going to learn about past indefinite tense. Past indefinite tense वो होता है जिसमें हम describe करते हैं actions that happened and finished in the past. तो वो actions जो शुरू हुए और ख़त्म हो गए past में वो होता है past indefinite tense.
to learn about past indefinite tense. Stay tuned and listen to the next video of this channel. Like, share and subscribe to Witsol.